Hello friends, welcome everyone. Good evening ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ इंडियन पॉलिटी रो वेरी इंपोर्टेंट क्विक रिवीजन सेशन को ସମସ୍ତେ जल्दी जल्दी आसी जाओ स्टार्ट करवा सेशन को एंड स्टार्टिंग रो लाइक शेयर कर दियो सो दैट योर फ्रेंड्स कैन आल्सो वॉच स्वागत स्वागत ସମସ୍ତଙ୍କୁ गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम टू एक्सप्लोरिंग गोल्स स्वागत आज रो इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट सेशन पूरा कंसंट्रेशन रहो सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सब टीचिंग एग्जाम्स सबुति पई इंपोर्टेंट इंडियन पॉलिटी रो आज रो क्विक रिवीजन रो सेशन बहुत इंपोर्टेंट किसी पॉइंट्स को देखिबा इंडियन पॉलिटी विषय रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय रे गुड इवनिंग फ्रेंड्स आसी गलो चलो तो आओ लेट करबानी स्टार्ट करबा समस्त को स्वागत एक्सप्लोरिंग गोल्स को जो मैंने सब्सक्राइब करना हमारा यूट्यूब चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिनियो जो मैंने एप्लिकेशन रे जॉइन करिनो एप्लिकेशन रे जॉइन करि पारिबो कंप्लीट प्रिपरेशन विथ मॉक टेस्ट क्लासेस पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल्स ई बुक्स पई टेलीग्राम चैनल रो लिंक मध्य देछि निश्चय जॉइन करि समस्ते एंड एप्लिकेशन को पीसी रे मध्य यूज करि पारिबो हमरो वेबसाइट को यूज करी कि in case of any issues you can whatsapp in this contact number जहाँ भी डाउट्स अछि पचारि परिबो जीवा स्टार्ट करिवा आज रो इंपोर्टेंट सेशन को रेडी समझते ओके लेट्स बिगिन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रू समस्ते फुल कंसंट्रेशन रखिबो सो दैट सब जिंस माइंड को ओपन रखिले ही पॉसिबल इंट्रोडक्शन रेडी समझते चलो First, it was in 1934 that the idea of Constituent Assembly for India was put forth for the first time. Clearly visible होउची जदि न होउची ताहले क्वालिटी को टिके बढ़ाई दियो जेमते विजिबल हबो जो क्वालिटी रे सेही क्वालिटी रे रखो ओके ठीक put forward for the first time by M.N. Roy 1934 रे constituent assembly रो आइडिया प्रथम तरह पई M.N. Roy आनिथिले a pioneer of communist movement in India and advocate of radical democratism नेक्स्ट 1935 रे कौन है 34 रे आइडिया आसिला कंस्टिट्यूएंट असेंबली रो कि आनिले एमएन रॉय क्लियर गोटे गोटे जिंस पूरा 100% मुंड रे पसिजिवो एले बोली भाबनी केवल जानो एगोडा सब इंपोर्टेंट जिंस अछि अगेन यू कैन वॉच एंड मेक नोट्स 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 रे डिमांड कला कंस्टिट्यूएंट असेंबली to make a constitution for India. Right? Next point को जिबा 1938 रे कौन हला जवाहरलाल नेहरू on behalf of the Indian National Congress declared that Constitution of India must be framed without outside interference by the Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise. तो 1938 रे जवाहरलाल नेहरू कहले जे इंडिया रो गोटे constitution बनिबा दरकार. Next, the demand was finally accepted in principle by the British government in what is known as August Offer of 1950. एक्सेप्ट करागला जे इंडिया पाई गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बना जाओ ये गोटे स्वतंत्र देश या पाई गोटे स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन बना जाओ गुड इवनिंग वेलकम समस्त को प्रणाम हाँ आस आस जल्दी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बनैबा दिगरे आमे आगे को जाउछे नेक्स्ट असला अगस्त ऑफर 1940 परे 1942 रे स्टाफोर्ड क्रिप्स आसिले ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट came to India with a draft proposal of British government on framing independent constitution to be adopted after World War II. World War II सरी गला 1942 आसी गला सेते बेले आसिले किए स्टाफोर्ड क्रिप्स आसिला परे कहले इंडिया रो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन गोटे
frame hoba darkar. Finally, a cabinet mission was sent to India in 1946. While it rejected the idea of two constituent assemblies, it put forth scheme to formulate a constitution making body, Constituent Assembly of India गोटे तैयारी करा जाओ और Constituent Assembly द्वारा constitution बना जाओ. ए पर्यंत आमे पहुंचले. ओके प्रियंका, ट्रिप्स मिशन केबे 1942. ओके, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनीगला, कमिटी बनीगला. एबे कौन हबा देखिबा. So the Constituent Assembly, which had been elected for undivided India and held its first sitting on December 9, 1956, resembled on August 14, 1957. August 14, 1947 बुझीपारुछ केबे रिजेम्बल्ड हला, जेबे अनडिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड हला. December 9, 1956 रू August 14, 1947. It was elected by indirect election. छाड़ी दवा आगु जीवा. The essential of this scheme were as follows. 292 members को बछा गले, while the Indian state were allotted a maximum of 93 seats. The seats in each province were distributed among three main committees: Muslim, Sikh and General Committee. तीनटा भितरे सीट गुड़ा डिस्ट्रीब्यूट होइतला. ओके, आगु जीवा देखिबा कोन अछि. As a result of petition under plan June 3, 1947, a separate constituent assembly was set up for Pakistan. जेतु डिवीजन होबा को जाउची, इंडिया डिवीजन होबार थिला, and Pakistan a new country जोटा कि ओरिजिन होबार थिला इंडिया रु, सेति पय अलगा प्लान हला, नुवा constituent assembly हला. ओके, the representatives of Bengal, Punjab, Sindh, northwestern frontier province, Baluchistan and Sylhet district of Assam, which had joined Pakistan by the referendum. तापरे East Punjab, the membership of the house was reduced to 299, and of these 284 were actually present on November 26, 1949, जेतेबेले सिग्नेचर हला to the constitution as finally passed. Finally constitution pass हला and India रो गोटे special constitution हला November 26, 1949 रे. This date should be remembered. ये questions बारंबार आसे. आगु को जीवा. December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in the assembly. It laid down fundamentals of philosophy of constitution structure. ये सब को डिटेल रे मु डिस्कस करनी, जति कि बहुत इंपोर्टेंट ताकू ही देखिबा. But this PDF you will get in our application exploring goals रे PDF को तुम माने पाई परिबो for detailed study. जदि चाहिबो detailed study करि परिबो. Committee of Constitution Assembly कहि दउची. यूनियन पावर कमिटी रे चेयरमैन रहिले जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रे जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रे सरदार पटेल रहिले चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमिटी रे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर रहिले चेयरमैन, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, सरदार पटेल रहिले चेयरमैन. आउ एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एक्सक्लूडेड भितरे फंडामेंटल राइट सब कमिटी रहिला, जेबी कृपालिनी रहिले चेयरमैन. इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट. नेक्स्ट इज माइनॉरिटीज सब कमिटी, एच.सी. मुखर्जी रहिले चेयरमैन. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, आसाम एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी, गोपीनाथ बरदोलोई. नेक्स्ट आसिले एक्सक्लूडेड partially excluded areas सब कमिटी रे ए भी टक्कर. तापर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहिले रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी रे, स्टेट कमिटीज रे रहिले जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमिटी रे रहिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. या ऊपर क्वेश्चंस बहुत गुडे आसे. क्वेश्चन आसी पारे जे चेयरमैन को कमिटी रो, कंस्टिट्यूएंट असेंबली रो कमिटीज, ये होची कमिटीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, को कमिटी रे किए थिले चेयरमैन. वेरी इंपोर्टेंट वन. नेक्स्ट सबुठु इंपोर्टेंट, आहुरी इंपोर्टेंट जिनस एटा, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को को जगह रु कौन जिनस बोरो करा जायतिला जा ऊपर क्वेश्चंस मैक्सिमम आसे बारंबार कहूँ इंडियन पॉलिटी रे जदि क्वेश्चन सबुठु अधिका कोठु आसे सेटा होची एटा कौन यूनाइटेड स्टेट्स रु कौन कौन आसी सबुठु इंपोर्टेंट प्रिएम्बल फंडामेंटल राइट्स फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टोरल कॉलेज judicial review independent of judiciary and separation of powers among branches of the government 3 branches of the government president as supreme commander of armed forces equal protection under law ये सबू जिनस यूनाइटेड स्टेट्स रु बोरो होईची फ्रेंड्स मन रखिबा या भितर गुटे कोटा भी आसी जाई पारे क्वेश्चन प्रिएम्बल नॉर्मली आसे फंडामेंटल राइट्स भी आसे इलेक्टोरल कॉलेज भी आसे तेणु सबू जिनस को जानिबा निहाती फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट भी आसे सो यूनाइटेड स्टेट्स रु ए सब प्रोविजन्स आसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इंपोर्टेंट थैंक यू समस्त एते इंटरेस्ट देकी समस्त पूरा फुल फोकस रे अछो भावुची तुम मैंने निश्चय यार फायदा उठे पार नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम रु कौन कौन आसुची यूके रु पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट बारंबार क्वेश्चन आसे आ गोटे कौन आसे रीड्स आसे राइट तापरे आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ एटा भी आसी एग्जाम रे आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एटा भी आसे एग्जाम रे सब आसुची यूनाइटेड किंगडम रु क्लियर चलो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल लॉ मेकिंग प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ ए सब जिनस यूनाइटेड किंगडम रु बोरो करा जाउची यूके रु बोरो करा जाउची यूके रे इंग्लैंड अछि तो एठी केयरफुल रहबो जतबे क्वेश्चन आसुची नेक्स्ट कनाडा क्वेसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एटा क्वेश्चन आसे कनाडा जते बेले भी आसीची distribution of power between central government and state government residual powers retained by central government तो quasi federal form of government बहुत तरह सबुठु highest number of question number of times आसीची क्वेश्चन सेकंड रे जदि कनाडा कथा कहबा ताले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल आउ स्टेट गवर्नमेंट एटा मध्य कनाडा रो गवर्नमेंट रु आमे भरो करूचे राइट टिके भी एपट सपट होबा कथा न यूनाइटेड स्टेट्स रो हमें स्टार्ट करछे प्रिएम्बल फंडामेंटल राइट्स फेडरल स्ट्रक्चर इलेक्टोरल कॉलेज जुडिशियल रिव्यू प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस सेमिति यूनाइटेड किंगडम रे रीड्स आसिला पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आसिला सिंगल सिटीजनशिप आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ स्पीकर एंड हिज रोल्स विषय जानले नेक्स्ट हला कनाडा क्वेसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भितर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सबुठ इंपोर्टेंट आयरलैंड आयरिश रु आसिला कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सब बड़े क्वेश्चन आछे डीपीएसपी बारंबार सबुठ हाईएस्ट टाइम ऑफ हां एटा पचरा जाउची आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु कोन आछी सेमती नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एटा भी बहुत इंपोर्टेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रो मेथड टा हमें आयरलैंड रु बोरो करूचे गॉट इट चलो गोटे थर समस्त कह दियो जे जानी गलु बोली यस माध्यम रे तमरो मु जानि जेबी जे तुम माने हां सुनुचो आ जानिचो भी आगरु किछि किछि रिवाइज होउची आ जेहेतु एटा गोटे रैपिडली हमें कवर करबा क्विक रिवीजन रे तेणु समस्त कंसंट्रेशन मध्य फुल रहिबा निहाती दरकार फ्रांस को जदि हमें पळेबा तो समस्त यस हे गला वेरी गुड थैंक यू चलो रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी इन द प्रिएम्बल रे तीनटा जाक वर्ड अछि एक्स्ट्रा वर्ड्स भी अछि बट लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी फ्रांस रो अछि बटा बहुत बढ़िया नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया रु कोन असला फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स बट ऑस्ट्रेलिया जते बेले भी क्वेश्चन आछि एटा जते बेले टू एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट रे गलानी सेबे टू कंकरेंट लिस्ट कोठु आछि बोली बेसिक क्वेश्चन आछि आ इक्वालिटी हां एटा तो फ्रांस रो इक्वालिटी फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी एटा भी बहुत थर क्वेश्चन आसे बट एथरे जदि आछि कंकरेंट लिस्ट आछि बेसिक क्वेश्चन नेक्स्ट जिबा यूएसएसआर रे फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स आसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रु फंडामेंटल राइट्स बट फंडामेंटल ड्यूटीज भी किछि हमर अछि के कहउछि यूएसएसआर रु आनिले हमें
idea of social, economic, and political justice in preamble, constitutionally mandated planning commission to oversee the development of economy. Eta bi USSR ru asuchi. Very good. Thank you. South Africa ru procedure of amendment बहुत important and election of Rajya Sabha members. Amendment is जिनसोटा परिवर्तन आमे करि परिबा with time to time in the constitution and विभिन्न article रे amendment South Africa कहिला, Germany कहिला emergency power to be enjoyed by the union, suspension of fundamental right during emergency. Japan procedure established by law. So these are important, friends. Next हमें acceptance of constitution आड़े जिबा. तो मैंने जानी चाहिए यार importance कितने अच्छी जहाँ भी हमें वर्तमान पर्यंत discuss करी छे rapid revision रे acceptance of constitution. Dr. B.R. Ambedkar introduced final draft of the constitution in assembly on November 4, 1948. Fast reading रे. The assembly had a general discussion on it 5 days till November 9, 1948 ଯେତେବେଳେ accept ହେଲା. Second reading started on November 15, 1948 and ended on October 17, 1949. During this stage, as many as 7653 amendments were proposed and 2673 were actually discussed in the assembly. जहाँ भी आर अंबेडकर कही देथिले से सब जिनस को पढ़ा जाइथिला. नवेम्बर 4 रु आरंभ होला. प्रथम फास्ट रिडिंग रे नवेम्बर 9 पर्यंत 5 दिन चलिला एवं तापर सेकंड रिडिंग स्टार्ट होला जहाँकि नवेम्बर 15 रु अक्टोबर 17 पर्यंत चलिला एवं ता मध्य रे आलोचना हेछि 7653 विषय जो 2473 रे डिस्कस है कि अमेंडमेंट होना जाइछि. फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अंबेडकर. ओके. थर्ड रीडिंग असला ड्राफ्ट स्टार्टेड नवेम्बर 14, 1949. Dr. B.R. Ambedkar moved a motion the constitution as settled by assembly be passed. The motion on draft constitution was declared as passed on November 26, 1949 जो दिन को हमें मने रखिछे एबे भी and received the signature of the members and the president. Out of total 299, only 284 were actually present on that day and signed the constitution. तो एटा भी important एग्जाम रे बहुत थरा आछी 284 जनकर सिग्नेचर थिला constitution जेते बेले पास हला. This is also date mentioned in the preamble as the date on which people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves the constitution. People of India निजकु निजे adopt कले, enact कले और निजकु निजे present कले constitution बोली मेंशन अछि ए डेट जोटा होछि नवेम्बर 26, 1949. डन. बट ता परे पुनी कोन हेछि 1950 काहे कि हम मने पकोचे बेले बेले देखिबा. Constitution as adopted on November 26, 1949 contained preamble 395 टा आर्टिकल थिला 8 टा शेड्यूल्स थिला. वर्तमान से बढ़ी गलानी. ओके. द preamble was enacted after वर्तमान केतेटा आर्टिकल्स अछि. आर्टिकल्स वर्तमान केतेटा अछि आ शेड्यूल्स तो छाड़ 12 टा म कहि दउछि. बट आर्टिकल बहुत जल्दी जल्दी चेंज होउछि. वर्तमान आर्टिकल संख्या केते टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि वर्तमान कहबा 395 थिला जेतेबेले ओरिजिनली सब बेले गोटे जिंस मन रखता जेतेबेले ओरिजिनली लिखा हितबो 395 आ ओरिजिनली न लिखा हितले विथ टाइम टू टाइम चेंज हो. वर्तमान 448 बोधे सॉरी हां 448 ना बढ़िलानी 470 25 टा पार्ट्स 470 की नहीं प्लस मते कहनी 470 आउ पार्ट्स जदि देखिबा ताले 25. ओके. तापरे देखो डॉक्टर बी आर अंबेडकर द law minister violated the draft constitution in the assembly. He is recognized as the father of constitution of India, father of the constitution of India बोली कहवा वाला. Okay, clear.
थैंक यू ताले चीफ आर्किटेक्ट बोली को आगला and constitution of the constitution of India is also known as modern मनु संहिता मनु लिखिथिले ये मॉडर्न मनु बोली को जाउची डॉक्टर बी आर अंबेडकर को ओके some provisions of constitution pertaining to citizenship election provisional parliament temporary and transitional provisions are short title contained in article एसबू रे अच्छी तो आम डिटेल रे आर्टिकल विषय रे भी देखिबा ओके आकु जीवा जनवरी 26 1950 कथा आम कहूचे कौन हैला ए दिन रे the remaining provision of the constitution came into force. This day is referred to as constitution in the constitution as the date of its commencement and celebrated as Republic Day. The day of commencement or date of commencement of Indian constitution and Republic Day हिसाब रे हमें जनवरी 26 1950 को celebrate करते जनवरी 26 was specially chosen as the date of commencement of the constitution because of its historical importance. It was on this day in 1930 Purna Swaraj Day was celebrated. 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ଯେହେତୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଦିନକୁ ବଚାଗଲା ରିପବ୍ଲିକ ଡେ କରିବା ପାଇଁ 1950 ରେ ଆଉ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେଇ ଦିନ କରାଗଲା ବିକଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଇଥିଲା 1930 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ following the resolution of Lahore session ଆଗକୁ ଯିବା with the commencement of the constitution Indian Independence Act 1947 and the Government of India Act 1935 with all elements amending and supporting the latter were repealed सब चली गला Indian Independence Act भी गला India Act of 1935 भी गला एबे गोटे जिंस रहिला जहाकू मानिबो इंडियन गवर्नमेंट एवं ताकू माने कि सुशासन भारत वर्ष रे हला जार ना होची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो प्रिएम्बल जिनसटा कौन प्रिएम्बल गोटे क्वेश्चन आसे प्रिएम्बल को कौन कहा जाए गोटे गोटे हला फंडामेंटल राइट को कहा जाए आ गोटे हला प्रिएम्बल को कहा जाए प्रिएम्बल को कौन कहा जाए हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा और फंडामेंटल राइट को कौन कहा जाए मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहूच फेस कहूच मुख बंध ओके प्रिएम्बल टा होची सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या को कहवा राइट नहीं फंडामेंटल राइट नो कना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज हार्ट एंड सोल दीटा जाक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज वेरी गुड जो मैंने कहलो आंसर परफेक्ट वेरी गुड ओके प्रिएम्बल as amended in 1976 of Indian Constitution reads, we the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, quality of
status, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitution as Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. এইটা লেখা হয়েছে না, right? 1976 42nd amendment, mini constitution, preamble asila. Preamble sets out the main objects of the constitution, the objects which the constitution markers intend to be realized through it. Okay, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ଟିକେ. The framer of Constitution of India set out two purposes in the preamble. First, constitution constitute India into sovereign democratic republic. It is republic because the head of the state is not hereditary monarch. कहीं की रिपब्लिक है, कहीं की राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी सिस्टम नहीं, तेणु एटा रिपब्लिक. इट इज हाँ, राजा वही बनेगा, बस बस ठीक. जो हकदार होगा ना. इट इज डेमोक्रेटिक बिकॉज द constitution rests on people's will and the institutions set up under it shall seek to give effect to democratic principles. Okay, the sovereign ame janile sovereign kono, because the constitution does not recognize the legal supremacy of another country over India. You're free from other country. Our membership of Commonwealth of Nations is not inconsistent with our independent and sovereign status. Socialist and secular भी कुआ वाला. Secular କାହିଁକି secularism ଅଛି. Religion ର freedom ଅଛି, freedom to religion. Citizens ମାନଙ୍କର secure to citizens justice, social, economic ଆଉ political justice ମିଳିବ. Liberty of thought ଅଛି, express କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, faith, worship କାହାକୁ କରିବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି. Equality of status, opportunity ସମସ୍ତଙ୍କୁ equal ଦିଆଯିବ. And promote among the people of Indian fraternity, assuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation. ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ preamble ଲେଖିଛି. Preamble ଦର୍ଶଉଛି, ଜଣଉଛି, ବୁଝଉଛି. Got it? Social justice, economic justice ଛାଡ଼ିଲେ ଟିକେ. Political justice, significance of the preamble ଟିକେ ଆଗକୁ overcome କରିବା. ओके, केस गुड़ाक आउ केबे डिस्कस करी. वेरुवारी यूनियन केस अच्छी, केशवानंद भारती केस अच्छी, जा ऊपर क्वेश्चन आसे. अमेंडमेंट ऑफ प्रिएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन, एगुड़ा मु स्किप करके जाउची. केशवानंद भारती केस रो क्वेश्चंस आसे बहुत टाइम. तापरे इंपोर्टेंट पार्ट्स वाली पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस कौन कौन अछि. फर्स्ट पार्ट टोटल केतरा अछि कि पार्ट्स केतरा अछि. आ टिके तळगु नेले जानिबो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो फर्स्ट रो में जिबा. फर्स्ट हला द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 रु 4 भीतर रहिला. तापर आसला सिटीजनशिप 5 रु 11 आर्टिकल. फंडामेंटल राइट 12 रु 35 ये थर्ड पार्ट रे गला. फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 रु 51 पर्यंत आर्टिकल. फंडामेंटल ड्यूटीज 4A रे 51A रे रहिला आर्टिकल रो. यूनियन गवर्नमेंट 5 नंबर पार्ट रे 52 रु 151. 6 नंबर पार्ट रे स्टेट गवर्नमेंट 152 रु 237. यूनियन टेरिटोरीज 8 नंबर पार्ट रे 239 रु 242. सेमती द पंचायत 243 टू 243 ओ माने ABCD EFG HIJKL MNO हेकी जाइछि सेटा. नेक्स्ट हला द म्युनिसिपालिटीज रहिला 9A रे आर्टिकल देखो. शेड्यूल्ड ट्राइब, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 244 रु 244A. रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स रहिला. फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स तापरे 13 रहिला. ट्रेड कॉमर्स इंटर
intercourse within the territory of India, services under union and states, tribunals, election रहिला 15 नंबर पार्ट रे तापर स्पेशल प्रोविजंस फॉर एसटी एससी ओबीसी एंड आंग्लो इंडियंस 16 नंबर रे 17 रे ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर्टिकल एपटे मेंशन अछि तापर रहिला 18 इमरजेंसी प्रोविजंस एटा बहुत इंपोर्टेंट 352 रु 360 पर्यंत तीन प्रकार रो इमरजेंसी रहिला मिसलेनियस 361 रु 367 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368 नंबर आर्टिकल रे रहिछि अमेंडमेंट जोटा 20 नंबर पार्ट रे सेमती टेम्पोरारी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन 21 रे 22 रे शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स तो एतिक जिनस एठी हमको मिलगला 22 टा बट एक्चुअली केतेटा अछि 25 टा 22 टा थिला वर्तमान 25 टा हेछि वर्तमान जहाँ हेछि ता ऊपर रिसर्च निजे करिवो तम मन को पाई छाडिली शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस तबे शेड्यूल्स केतेटा अछि यस देखो जल्दी 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 कहो केतेटा रहला देखो केतेटा बहुत बढ़िया देखो एटा को पार्ट इंपोर्टेंट कहि के रहनी काहे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर वेरी इंपोर्टेंट एटा तमे पॉलिटी रो पॉलिटी कहले एई पीडीएफ टाको थरोली एई क्लास टाको थरोली देखो जहाँ जहाँ अच्छी ताको कवर करो बहुत गुड़े क्वेश्चन रो राइट आंसर दे दबो बेसी कंफ्यूज होनी याडे सियाडे मातनी फास्ट शेड्यूल नेम एंड स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज रहिला ओके सेकंड रहिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अच्छा सब जिनस अलाउंसेस कौन प्रिविलेजेस कौन मिलुची आउ एमुलमेंट्स कौन कौन फैसिलिटीज तांको मिलुची कौन कौन ड्यूटीज अच्छी कौन कौन रेस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी केते सैलरी मिले ए सब जिनस रहिला कार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट सब इंडियन जतक स्टेट अछन सब स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट जजेस हाई कोर्ट जजेस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ए समस्तंकर अलाउंसेस प्रिविलेजेस एंड एमुलमेंट्स विषय रे कहूची शेड्यूल 2 3 रे असला कंटेन्स द forms of oath and affirmation union of minister kono oath taking of a parliament of parliament election candidates MPs supreme court judges controller and auditor general state minister भी state election legislature election candidates legislature members high court judges schedule 4 रे रहला contains the provision of relation to allocation of seats for states and union territory in Rajya Sabha. 5 रे रहला contains provision for in relation to the administration and control of scheduled area and scheduled areas and scheduled tribes. 6 रे रहउची contains provision relationship to administer tribal areas of states. Article 6 schedule 6 रो demand जेमती हमें जानी चाहिए जे लद्दाख भी करूची ट्राइबल एरियाज स्टेट्स रे जाउची शेड्यूल 6 अंडर स्पेशल प्रोविजंस रहउची फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम नंबर 7 रे रहउची डील्स विथ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट शेड्यूल 7 अंडर रे जाउची नेक्स्ट ला शेड्यूल 8 जो तरे लैंग्वेजेस जाउची जो 22 टा लैंग्वेज अछि 22 टा ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 22 टा लैंग्वेज कौन कौन आसामी बंगाली बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कन्नड़ काश्मीरी कोंकणी मथिली मलयालम मणिपुरी मराठा नेपाली ओडिया पंजाबी संस्कृत सांताली सिंधी तमिल तेलुगु उर्दू डील्स तापर आसला नंबर 9 शेड्यूल्स रे एटा एमती क्वेश्चन भी आसी पारे देखो 22 टा जोगुडा रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज 22 टा अछि ए 22 टा भितरु कोट माने क्वेश्चन देइथिबो कोटा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नो चारटा देइथिबो ऑप्शन रे डोगरी देइथिबो बोडो देइथिबो काश्मीरी देइथिबो कोंकणी देइथिबो
तुम पाई बहुत डिफिकल्ट हो माने या भितर देखो आउ गोटे कौन अलग दे देथिबो आउ गोटे कौन अलग दे देथिबो जोटा एटा नाही एठी नथिबो सेमती किसी दे दो तो कंफ्यूजन हबार चांस अछि आउ गोटे जिंस हला हमरो क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एटा भी जानिबो निहाती दरकार कौन कौन अछि तमिल एटा अलग जिंस सेटा अलग जिंस ओके तेलुगु संस्कृत कन्नड़ मलयालम ओडिया which is not a classical language आसी पारे तमिल 2004 रे डिक्लेयर हेतिला एटा भी क्वेश्चन आसी पारे सेमती संस्कृत 2005 रे डिक्लेयर हेतिला कन्नड़ तेलुगु 2008 रे डिक्लेयर हेतिला संस्कृत 2005 रे मलयालम टा हेतिला 2013 रे ओडिया टा हेतिला 2014 रे तेणु याकू ताकू नहीं कि घंटी हबनी कंफ्यूज हबनी को जिबा 9 number deals with state acts regulation that deals with land reforms first amendment act 1951 added in 9th schedule एथरे आड हेतिला को जिबा तापरे 10 contains provisions relating disqualification of members of parliament schedule was added by 52nd amendment act 1985 देखो प्रथमे केतेटा थिला शेड्यूल की constitution जेतेबेले बना हला originally how many schedules are there when constitution was made केतेटा थिला 18टा थिला वर्तमान 12टा तो एठे सेति पय लिखा गला 9 नंबर टा आड हला फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट रे 1951 रे ओके 10th टा आड हला 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 रे also known as anti defection law बोली कुआ जाय नेक्स्ट 11 नंबर हला 73rd amendment act 1992 रे आड हला contains provision that specify the powers authority responsibility of panchayats it has 29 matters the schedule was added by 73rd amendment 1992 deals with provisions that specify the powers authority responsibility of municipalities कोटा 12 नंबर टा 74th amendment act रे आडेला 1992 रे एतिकी क्लियर आगु को वर्तमान बढ़िबा किछि नै सब जिंस मुंडो भितरे पसि जिवो मन रहि जिवो बोली भाबनी जस्ट कंसंट्रेट करो जतिकी हला जतिकी रिवाइज हला जतिकी नवा आड हला जतिकी न हला ताको आउथरे देखिबा union and its territories and citizenship part 1 रे रहिला union and its territories article 1 रे लिखा हला इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states the states and territories thereof shall be a specified in first schedule the territory of india shall comprise kon kon territories of states union territories such other territories as may be required acquire करिवो इंडिया को आर्टिकल 2 को जतबेले जिबा हमें सेतरे लिखला पार्लियामेंट मे बी लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट पार्लियामेंट सेमतिया लॉ तयारी करिवो बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स जदी तयारी हला पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट increase the area of any state diminish the area of any state alter the boundary of any state alter the name of any state ए जिनस आर्टिकल 3 रे अछि जा द्वारा स्टेट्स रो टेरिटोरी को कम बेसी करी हबो बाउंड्री को अल्टर करी हबो कम बेसी करी हबो नुआ स्टेट तयारी करा जाय परिबो आउ स्टेट रो ना बदलै दिया जाय परिबो आर्टिकल 3 इंपोर्टेंट समस्त देखि पड़छ तो क्लियरली जदि क्लियर आसुनी ना क्वालिटी टा 360 कि 480 करो ओके प्रोवाइडेड इनटू
provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of the president and unless. Next, emergency of states. In 1950, Constitution contained a four-fold classification of states and territory in Indian Union: Part A, Part B, Part C, states, and Part D, territories. In all, the number 29. ସେତେବେଳେ କେତେ ହଉଥିଲା? States ଆଉ territories ମିଶିକି 29. Part A states comprised 9 erstwhile governors provisions of British India. चलो एटा एते डिटेल रे मु जाउनी, ठीक है, स्किप करूची. कमिशन विषय रे हमें आउ केबे कमिशन कमिटीज गुडा को देखिबा. बहुत गुड़े जिनस जो जिनस गुड़ा अच्छी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 रे अच्छी. राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 रे अच्छी. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, आर्टिकल 19 रे अच्छी. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30 रे अच्छी. राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी. Okay, right to contest for membership of parliament is सब जिनस. Okay, constitutional provisions. Constitution deals with citizens from article 5 to 11 under part 2. It only identifies the person who become citizen of India. It does not deal with problem of acquisition or loss of citizenship. Okay. सिटीजनशिप एक्ट अच्छी 1955 रे केमती केमती भारतीय नागरिकता ग्रहण करा जाय परिबो, भारतर नागरिक होई परिबो. बाय बर्थ होई परिबो, डिटेल कहूनी. बाय डिसेंट होई परिबो, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर January 26, 1950 but before December 10, 1992 is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at the time of his birth. छुआर जन्म हैला बेलकु जदि बापा इंडियन सिटीजन थिबे एवं सेटा दैट सेटा 1950 रो 1992 भितर हेतिबो, ताले से इंडियन सिटीजन हेई परिबे. ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर December 10, 1992 is considered as a citizen of India if either of the parents is a citizen of India at the time of his birth. एटा होची बाय डिसेंट. सेमती बाय रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में on an application register as a citizen of India any person not being an illegal migrant. Illegal migrant है नथिबे जे कोनोसी लोक को इंडियन सिटीजनशिप नहीं पारिबे by registration. A person of Indian origin who is ordinarily resident of India for 7 years before making an application for registration. Minimum 7 वर्ष से इंडिया रे पुनी रहिथिबा दरकार अप्लाई करबा पूर्व, इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई करबा पूर्व. ओके, अंडर रे देखुचे हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 अंडर रे देखुचे. by birth, by descent, by registration. Next is acha out a person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration taku be considered kara jibo. A person of India origin who is ordinarily resident in any country or place outside undivided India, ताहले भी इंडियन ओरिजिन हेतिले इंडियन सिटीजन हेई परिबे. by naturalization. Naturalization कोन? Central government may on an application grant a certificate of naturalization to any person if he possesses the following qualification. कोन हेतिबो? He is not a subject of citizen of any country where citizens of India are prevented from becoming subjects. अलगा कौनसी एमतिया कंट्री रो सिटीजन है नथिबो जोठी इंडियन सिटीजन मान को प्रिवेंट करा जाउची सिटीजनशिप नबा पई. He is a citizen of any country. He undertakes to renounce the citizenship of that country. Good character रहितबो, knowledge थिबो, language थिबो, 8th schedule under रे एगुडा सब आछी. तापर आछी by incorporation of territory. फॉरेन टेरिटोरी ता थिला किंतु वर्तमान ए पार्ट ऑफ इंडिया हे गला,
तो फॉरेन टेरिटोरी जो माने थिले वर्तमान इंडिया रो जेहेतु पार्ट हला से माने सब इंडियन सिटीजन हे जिवे स्पेशल प्रोविजन एज टू citizenship of person covered by Assam Accord Citizenship Amendment Act 1985 कहूची added the following special provision for citizens person covered by Assam Accord all person of Indian origin who came to Assam before January 1966 from Bangladesh and who have been ordinarily resides in Assam since the date of their entry into Assam shall be deemed to be citizen of India as from January 1 1966 যদি बिफोर January 1 1966 ଆସିଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିକି ଆସାମରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଦିଆଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା 1985 ରେ लॉस ऑफ सिटीजनशिप सेमती केतेबेले हेपारे बाय रेनाउंसिएशन बाय टर्मिनेशन बाय डिप्राइवेशन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कौन तो एगुड़ा सब जिनस अच्छी ताको मु टिके स्किप करके आ गोटे जगह को जाउची एटा होची एनआरआई कोन पीआईओ कोन ओसीआई कोन या भितर फरक कोन नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया काहा को कुआ जाय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किए आ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया किए या भितर फरक कोन अछि देखिबा আজি प्योरली पाठ नहीं कि हो प्योरली पाठ तो प्योरली पाठ हितवा दरकार आडू साडू नथिबा कथा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो an Indian citizen who is ordinarily residing outside India and holds an Indian passport NRI କାହାକୁ କହିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ନେଇ ଅଛି ତା ପାଖରେ ବଟ୍ ରିସାଇଡ୍ କରୁଛି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ living outside India NRI non-residents of India next is a person of Indian origin person who or whose any of ancestor was an Indian national and who is presently holding another country's citizenship nationality that is she is holding foreign passport अछि foreign रे रहउछि किंतु तार ancestor भितरु केही जणे भी जदि इंडियन ताले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को आजो मदर और फादर केही भी जदि इंडियन अछंती नेक्स्ट इज overseas citizen of India a person registered as overseas citizen of India card holder the Citizenship Act 1955 अनुसार overseas citizen of India कार्ड मध्य दिया जाउची जोटा बाहर रहउछंती किंतु इंडियन सिटीजन बोली दिया जाउची फंडामेंटल राइट्स को तापर जिबा तो बहुत इंपोर्टेंट जिनस एतरे भरी की अछि फंडामेंटल राइट को जदि जाउचे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 रु 35 पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइटली डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया सब बेले क्वेश्चन आछे मन रखि थाओ मुंडो भीतर थाओ पार्ट 3 आर्टिकल 12 रु 35 फंडामेंटल राइट्स मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया डन बेसी समय नेबिनी डायरेक्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को आछे originally the constitution provided for 7 fundamental rights satata a right to equality right to freedom right against exploitation right to freedom of religion right of educational cultural and educational right of property right of constitutional remedy एबे केतरा हे जाईची 6टा हे जाईची नै कोटा कटि जाईची आ कुआडे जाईची right to property was deleted from the list of fundamental right in Amendment Act 1978. It is made a legal right under Article 300A in Part 12 of Constitution. खत्म ताले जो right to property एटाउ नाही right to property 1978 रो 44 नंबर amendment रे legal right रे स्थान पाइची part 12 हिसाब रे Article 300A एटा भी बहुत थरो क्वेश्चन आसुछ लीगल राइट रे अछि बोली क्वेश्चन आसुछि को अमेंडमेंट रे हेछि बोली क्वेश्चन आसुछि को ईयर रे हेछि बोली क्वेश्चन आसुछि को आर्टिकल को गला को पार्ट रे रहिला आगरो कोठी थिला 31 आर्टिकल रे थिला पळेला 301
So at present there are only 6 fundamental rights: equality, freedom against exploitation, freedom of religion, cultural and educational, constitutional remedies. Article 12 meaning of states कौन कहूची? Government and Parliament of India कौन executive and legislative of union विषय रे कहूची? Territories विषय रे कहूची? States विषय रे कहूची? Local and other authorities विषय रे कहूची? Declaring laws null and void, equality before law and equal protection of laws, rights on all person whether citizens or foreigners. तो एगुड़ा बहुत गुड़े जिनस यार भीतर अच्छी. नेक्स्ट पार्ट को जी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आर्टिकल 15 रे रहउची. इकोनॉमिक रिजर्वेशन टा रहउची. इकोनॉमिकल ग्रुप जो माने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रो जो माने रहउचंती तांको पई रिजर्वेशन रहउची 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 हिसाब रे आर्टिकल 15 और 16 अंडर रे. एटा भी इंपोर्टेंट. आर्टिकल 16 कहउची क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 17 कहउची abolition of untouchability. क्वेश्चन आसे बहुत थरा. आर्टिकल 17. आर्टिकल 18 कहउची abolition of titles. टाइटल्स माने जो उपाधि. हाँ, अलगा किछ नै. आर्टिकल 19 कहउची प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स. कौन कौन सही फंडामेंटल राइट्स गुड़ा को जमते कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट, राइट टू असेंबली, peaceably and without arms, peacefully, cooperative society, unions, associations move freely throughout the territory of India, settle in any part of the territory of India, any profession, or carry on any occupation, trade or business. ये सब rights दउची. protection of 6 rights article 19 रे. freedom of speech and expression. तापर आर्टिकल 20 कहउची प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस. खाली फोकस करता को आर्टिकल रे कोन अछि, बेसी डिटेल रे मु जाउनी. आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. विभिन्न केस रो मध्ये दिया जायछि. राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए सब बेले देखु चाकू. आ आरसीएफसी राइट ऑफ free and compulsory education for children under article 45 in part 4. Samti article 22 protection against arrest and detention. Article 23 prohibition of traffic in human being and forced labor. Article 24 prohibition of employment of children in factories etc. Right to freedom of religion article 25 रे रहउची. freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion. जे कौन से religion को हमें बाछि परिबा as per our choice. So right to freedom रहउची article 25 रे. article 26 freedom to manage religious affairs. 27 freedom from taxation for promotion of a religion. कहा को पैसा दे कि कौन से रिलीजन को प्रमोट करवानी से फ्रीडम. फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 क्वेश्चन आसे. थैंक यू हाँ राइट. मु जानी तुम पढ़ी पूरा पानी कर दो. मु जानी क्लास सरला पर मु जानी तुम सब पूरा बाया भलिया पढ़ियो पूरा पीडीएफ जो माने होचो मु जानी. right of minorities to establish and administer educational institutions. next asila article 31A. सेमती सब आर्टिकल्स देछि बट एटा मु
हाँ 32 आर्टिकल राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज एमती किछि किछि आर्टिकल थाए जोगुड़ा कि बहुत इंपोर्टेंट ताको देखिबा निहाती दरकार आउ हमर तो द सुप्रीम कोर्ट shall have power to issue directions or orders or writs for the enforcement of any of the fundamental right. These writs issued may include कौन writs अछि केतेटा अछि 5 प्रकार रो कौन habeas corpus mandamus prohibition certiorari ଆଉ quo warranto तो ये रीड्स विषय भी क्वेश्चन आसे बहुत टाइम एटी तार रीड्स विषय सब जिन दिगला डिटेल रे habeas corpus कौन means to have a body of कोड यूज करा जाए कौन करा जाए mandamus we command meaning होची we command direct a public authority to perform legal duties which it has not or refused to perform तापर आसला क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट वारंट एगोटा भी क्वेश्चन आसे तार मीनिंग कौन certiorari means to certify and prohibition last one prohibition is issued by the court to prohibit the lower courts tribunals and other quasi judicial authorities prohibit करिवो अन्य माननको हाँ from doing something beyond their authority तांको authority बाहर को जाइके करबा को allow करिवो तो एगुड़ा सब सेमती आर्टिकल गुड़ाक रहा सब इम्पोर्टाट आर्टिकल्स जा अंडर का अंडर कौन जाऊँगी सेटा देखिबार अछि आ सबू जिनस गोटे गोटे जिनस रिपीटेडली भी जोगुड़ा इम्पोर्टाट जिनस एठी तुम माने पाइबो features of DPSP कौन directive principle of state policy कौन denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws okay so this PDF is very important यही PDF टा मु फ्री पार्ट रे प्रोवाइड करबी आप रे फ्री रे तुम माने पाई परिबो एप्लीकेशन रे आप इंस्टॉल रजिस्टर लॉगिन कला परे ई बुक्स एंड PDF सेक्शन रे पाइबो ई का अंडर इंडियन पॉलिटी ओके एंड एप्लीकेशन रो लिंक तुम माने वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे पाई जिवो किंबा जदी पाउनो ताले गूगल प्ले स्टोर रो डायरेक्ट एक्सप्लोरिंग गोल्स सर्च करि देले भी पाई जिवो किंबा तापरे भी जदी किछि प्रॉब्लम होची यू कैन कांटेक्ट मी in WhatsApp only. Okay. Next, the difference between fundamental right and directive principle of state policy. कौन फरक अच्छी दीटा जाक भितर फंडामेंटल ड्यूटीज आम जमते देखुले जे यूएसएसआर रो को आम बोरो करिचे स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंडेशंस कौन थिला सब बड़ क्वेश्चन आसे सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी तो एथिरे दिस पीडीएफ हैज एवरीथिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केमती हुए आर्टिकल 52 of the constitution election rules election of president 54 55 manner of election 56 term of office 57 eligibility for re-election qualification 58 these are very important बहुत important election of president विषय डिटेल इलेक्टोरल कॉलेज केमती फॉर्मेशन हुए को माने वोट देई पारंती केमती तांको चूज करा जाए एमएलए मानकर रोल कौन एमपी मानकर रोल कौन राज्यसभा रोल कौन लोकसभा रोल कौन ओके टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एवरीथिंग इज देयर तापरे बाकी रहिला हाँ प्रेसिडेंट को विषय पले पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आछि कौन पावर्स अछि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को हम डिवाइड करि परिबा एमती डिफरेंट पार्ट्स रे एग्जीक्यूटिव पावर कौन अछि लेजिस्लेटिव पावर जुडिशियल इमरजेंसी एंड मिसलेनियस जेंतु मु कहउतली 352 रु 360 पर्यंत जो आर्टिकल्स अछि नेशनल इमरजेंसी constitutional machinery in states रे failure of constitutional machinery रे emergency and financial emergency सेमिति judicial रे seek advice of supreme court of power to grant pardon क्षमा प्रार्थना कले
क्षमा करि परिबे सेमति लेजिस्लेटिव रे पार्लियामेंट रे कोन रोल अछि नॉमिनेट केमति करि परिबे पार्लियामेंट को एटसेट्रा एग्जीक्यूटिव रे सेमति अपॉइंट काकू करिवे शपथ पाठ काकू करिवे डायरेक्टली एडमिनिस्टर करि परिबे यूनियन टेरिटरीज को मिसलेनियस अंडर रे सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस आउ कोन कंक्लूड एंड अप्रूव इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स कोन रहउची लेजिस्लेटिव पावर्स कोन रहउची एवं स्पेशल पावर बा विटो पावर absolute veto power कोन अछि प्रेसिडेंट कर suspension of veto by president pocket veto कोन everything is there money bill कोन financial powers कोन अछि functions कोन अछि money bill को केमती ग्रांट करि परिबे बा सस्पेंशन करि परिबे इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय रे डिटेल्स रे दिया गला तापर पार्डन केमती करि परिबे कम्यूटेशन रिमिशन रिस्पाइट रिफ्राइव तापर असला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइकवाइज यू विल गेट एवरीथिंग हियर इलेक्शन एंड यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज सब जिनस वन पीडीएफ यू विल गेट एवरीथिंग within this 174 pages attorney general रू धरिकी समस्त एठी अछंती केही आंकु छाडी के आ केही नाहंती पॉलिटी रे so this is everything you will get here बाकी आउ केते बेले मु पुणी डिटेल रे डिस्कस करी बाकी जा रही गला बिकॉज इट इज अ वेरी बिग थिंग आ गोटे सेशन रे कंप्लीट करबा कवर नो विभिन्न प्रकार रो बिल्स रू धरिकी बहुत इंपोर्टेंट एंड सब सिस्टमैटिक वे रे पीडीएफ रे अछि पंचायती राज अशोक मेहता कमिटी सब बड़े क्वेश्चन आसुची बलवंत राय मेहता कमिटी दीज आर वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स एंड बार बार क्वेश्चन आसुची तेणु यही गोटे पीडीएफ इंडियन पॉलिटी को हजम करिवारे साहाय्य करिवो आ सब जिनस दरकार बोली भी मु कहबिनी किछि किछि दरकार भी नहीं बाची कि पढ़िबार अछि तो बेसी टेंशन भी नवार नहीं रिक्वेस्ट समस्त को पीडीएफ टा को आराम से डाउनलोड करि नबो वीडियो को लाइक शेयर कर दबो एंड सब्सक्राइब भी करने को भूलिबनी यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग गोल्स को जदि नुआ अछ समस्त को मेनी मेनी थैंक यू स्टे कनेक्टेड विथ एक्सप्लोरिंग गोल्स आ पीडीएफ टा पाई तुम माने एक्सप्लोरिंग गोल्स रो जो लोगो इटा देखुछ गूगल प्ले स्टोर रे ताको पाई परिबो एवं ए लिंक मध्यम दे देबी जो मानकर किछि प्रॉब्लम अछि एते व्हाट्सएप करि परिबो एवं लिंक तुम माने डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर रो जस्ट सर्च करि दबो एक्सप्लोरिंग गोल्स जदि भी एप्लीकेशन टा पाई जिवो इजीली बहुत सहज एप्लीकेशन इंस्टॉल रजिस्टर लॉगिन इंस्टॉल कला बेले जहां मागिबो देई दबो इंस्टॉल करि दबो इंस्टॉल कला पर रजिस्टर करिवो रजिस्टर कला बेले जहां मागिबो देई दबो जहां दबो रजिस्टर कला बेले ताको यूज करके लॉगिन करिवो माने जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड रजिस्टर टाइम रे देइथिवो ताको यूज करके लॉगिन करबो एंड तापरे ओपन करके ई बुक्स एंड पीडीएफ लिखा है जो सेठी देखिवो इंडियन पॉलिटी अंडर यू विल गेट दिस एंड तुम माने रिवाइज करो रिवीजन करो सब जिंस एंड आई विल डिस्कस एठी एठी सब जिंस कोन कोन अछि सब दिया जाइछ विथ पेज कंटेंट अछि आपको तुम आराम से फॉलो करो फॉर मोर डिटेल्स थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग कनेक्टेड बहुत जिंस हमें डिस्कस करी आज सेशन रे 1 आवर ऑलरेडी हे सारलानी हम आशा करी तुम मैंने समस्त पीडीएफ को थरोली पढ़ो एंड एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर रिसर्च कर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन एक्सप्लोरिंग गोल्स बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को मेनी मेनी थैंक्स रैपिड रिवीजन बुक इंडियन पॉलिटी को निश्चय समस्ते फॉलो करिवो एंड गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस थैंक यू लाइक करि दियो लाइक जदि करना एबे पर्यंत एंड स्टे कनेक्टेड टेक केयर जय जगन्नाथ हाँ 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 एप्लीकेशन रे देखा राती 10 रे एक्जाक्टली डीएनए एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मेकानिज्म बट बेसिकली हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए को डिस्कस करबा आज राती 10 रे एप्लीकेशन रे थैंक यू जय जगन्नाथ